now is the CPR and money zone pivots. So those are all math based tools depending on open, high, low, close data of a period. Money zone, we apply it for 30 minutes. CPR, we use it for daily, weekly, monthly. This tells us the range. This tells us the value. Where is the value of the market shifting? Where is the POC shifting? And all these details we have already covered in the previous video series. So in this series, we'll be learning about Camarilla pivots. So basically, when we apply all three frameworks, one is CPR plus Camarilla plus money zone. Then you can have the clear strategy where you have to buy, where you have to sell. This is how you define your strategy. So basically, when you heard of Camarilla, so there are 10 layers to it or 8 layers. You can consider, okay, 8 layers. 8 layers like CPR had 4 resistances, 4 supports, and 3 averaging points. Same Camarilla pivots, Camarilla layers. So this is close. Okay, C plus ranges high minus low into 1.1 upon 4. This is the formula of H3 and L3. Cause see, so basically this is also an indicator, math based tool. This can be used as a developing indicator as well, and also if you're not using it as a developing, so this indicator holds the static value of two prices. One price is called H3 and one price is called L3. So basically this in what is there in the indicator, we'll be discussing everything in the video. So basically there are 8 layers to it. 1 2 3 4 upside, 1 2 3 4 downside. So basically एक सेकेंड. सो बेसिकली देर आर 8 layers टू इट. फॉर्मूला ये देख लो, बिल्कुल सिंपल सा था. जिसको समझ में आया होगा तो लिख लो, अदरवाइज फार्मूले की ज़रूरत नहीं है. I'll explain everything क्यों ज़रूरत नहीं है and all. So basically there are 8 layers to it. 4 and 1 2 3 4. So this lower layer is called L1, L2, L3, L4. This is called H1, H2, H3, H4. So basically, when opening happens in this layer, this says consolidation. Basically, simple consolidation. When opening is between layer 1 and layer 2, and previous close is also in the layer 1 and layer 2, consolidation. So basically, we can ignore this layer. Once you know the opening is happening, the open tick is between these two layers. So you can ignore those cases because this is the consolidation cases. No range has changed. So do not trade between layer 1 and layer 2 of the Camarilla pivots. Most important layer is layer 3 and layer 4. So down वाले को कहते हैं L3 और L4 layer, ऊपर वाले को कहते हैं H और L. So when the price is somewhere here between, मतलब it is above H2 and or also below L2, हम उन्हीं केस के बारे में बात करेंगे. So this is how you use maths to navigate it, कि हमें काम कहाँ करना है, काम कहाँ नहीं करना है. जो मैं बता रहा हूँ, it is all that I have already worked on and have seen things. So उसके एक्सपीरियंस से आई एम टेलिंग फ्यू थिंग्स विच आर लाइक शॉर्टकट, पर जाके रीड कर सकते हो बुक को, व्हाट द बुक सेज एंड हाउ यू कैन नेविगेट इट. सो बेसिकली ये जो मैथमेटिकल डिप्स हैं, सो दिस इज द बाइंग प्राइस, बाइंग द डिप L3. Generally L3 is the buying the dip and H3 is for the sell price, है ना. लेयर 3 लेयर 4 की बात 2 मिनट बाद में करेंगे. जस्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द लेयर। डस्टर कहाँ गया यार, अभी तो था मेरे हाथ में। व्हाट द हेल। भाई मैंने ना डस्टर खो दिया, अब भी मैं मेरे हाथ में ही था, पता नहीं। ओके, ये इग्नोर द बोर्ड कज जुगाड़ से मैं बताना चाह रहा हूँ सब कुछ। सो दिस इज H3 अपर लेयर, दिस इज L3। बस हम ये दो यूज करने वाले हैं। इसके ऊपर अगर टिक ओपन हो रहा है दैट मीन्स एक्सट्रीमली बुलिश। डू नॉट शॉर्ट, डू नॉट सेल। ओके, इसके नीचे अगर टिक चल रहा है एक्सट्रीमली बियरिश, do not buy. These are the rules. If the opening is below L3, this is one rule, and the opening is above H3, this is one rule. ठीक है? And when the tick is here, so you should be buying at L3 and selling at H3. समझे? कि जब टिक इसके अंदर है, and same when the tick is here, you should be selling at H3, removing at L3. वेरी सिंपल। सो बेसिकली सारे कंसोलिडेशन केसेस इसमें कवर हो गए। इन ऑल कंसोलिडेशन डेज क्या होता है कि मार्केट जनरली हैपन्स टू स्टे इन H3 एंड L3 लेयर्स। सो बेसिकली इसके ऊपर के सारे केस बुलिश केस होते हैं। अगर H3 टूट गया है, डेली H3 हैज बीन ब्रोकन, तो इट्स बुलिश। द कैमरिला बायस इज बुलिश, यू कैन से दैट। And when the L3 is broken down, then you can say it's for sell bias. ठीक है, इसके बीच वाले में हमें एग्जिट यही करनी है। सीधी सी बात समझ में आ गई है। आई थिंक बायस सेटिंग मैंने पहले से भी समझाया CPR वीडियोस में, हाउ टू सेट द बायस। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। L3 के अगर नीचे है, L3 के नीचे है, विफ ओपन tick is less than L3, it is for sell bias. When open tick is greater than H3, it's for bullish bias, bull bias. Very simple. इस केस में the rule is, इस केस में do not buy, don't buy. Once the price is below L3, you should not be buying. And once the price is above H3, do not sell, do not sell. सिंपल से ये दो लॉजिक है कैमरिला के, इट्स नॉट मच. And also, what you can do with the Camarilla pivots, what you can notice, if the previous day closing, like suppose कि ये previous day के Camarilla थे, ये this is L3, this is H3, ये अगले दिन के Camarilla हैं, कहीं भी बन सकते हैं, L3 H3. If the closing was above H3 and the opening is above H3, extremely bullish case, bullish case, good bullish case. And also एक मिनट और डिस्कस कर लेते हैं. सो देर आर, व्हेन यू से टू पीरियड कैमरिला रिलेशन, ये भी 6 टाइप के ही बन सकते हैं जैसे CPR का था. एक एक ये केस हो गया, दिस वाज डे 1, डे 2. एक ये केस हो गया, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ये हमने CPR वीडियो में डिस्कस कर चुका है. सो 2 दिन को हम कैसे देख सकते हैं, दिस इज डे 1, डे 2, ये 2 केस हो गए. तीसरा केस कैसा हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है, दिस इज अनचेंज्ड, मतलब कंप्लीट ओवरलैप. ये प्रीवियस दिन का L3 H3 है, ये आज के दिन का L3 H3. एंड ऑल्सो दिस केस, दिस इज द ब्रेकआउट केस. इस दिन ब्रेकआउट होता है गाइज. अभी हम समझना सीखेंगे, पहले 2 दिन का रिलेशन सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं L3
H3. So these are the four cases. एंड फिफ्थ और सिक्स बिल्कुल सिंपल है. कहाँ पे बना दूँ? इसका अपोजिट केस हो गया ये सिक्स केस. ये ऊपर जा रहा है इसमें नॉन ओवरलैपिंग, और इस वाले का अब अपोजिट हायर वैल्यू ओवरलैपिंग. So this is first case, second case, third case, fourth case, fifth case and the sixth one. So इन सब के मतलब है this is cell bias, strongest cell bias. This is the strongest bullish bias. Okay, because non-overlapping. This is this is L3. This is previous day H3, and non-overlap has formed. Also, this is slightly bullish. This is slightly bearish. सीपीआर की रिस्पेक्ट में भी हम 2 डे रिलेशन देखते हैं. ये सब हमने सीपीआर सीरीज में ऑलरेडी कवर कर दिया है. सो देयर इज नो सेवेंथ डे. There is like no seventh case left. So when you have like 2 day Camarilla relationship, you can see that there are only 6 type of possible days, which we have already discussed. Also with respect to CPR as well, there were 6 cases, and with respect to money zone also there are 6 cases. So we need to consider everything. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आँख से देख के ट्रेड करना is almost impossible. So basically what we need to do, we need to notice open, high, low and close. So basically when the previous day closing is above H3, bullish bias, closing below L3, sell bias. सिंपल सी चीज है. सो हमें पिछले दिन का ओपन भी देखना है, ओपन ऑफ प्रीवियस डे एंड क्लोज ऑफ प्रीवियस डे. आई थिंक आई एम सिंपल ऑन दैट. लाइक बहुत अच्छे समझा दिया मैंने कि ओपन क्यों जरूरी है, ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, या ओपन यहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है. तो उस हिसाब से हम बायस देख सकते हैं कि बायस किस साइड को टर्न हो रहा है, वेदर इट्स गोइंग फॉर अ बुलिश मूव, सेल मूव. एंड अगर ओपन ही L3 या H3 के ऊपर या नीचे हो रहा है, दैट मीन्स दैट those cases are the strongest bias cases. I'll show you a few examples on the chart now. Wait, I'll turn off the camera for that. See what happened here. I took so you can use this indicator for CPR. This is for money zone, and this other one is for Camarilla pivot. So these two lines are H3. See, the opening was above. I tried selling here. Also taken a stop loss just now. Before like थोड़ी देर हो गई, but yeah, still you can see the bias is the bull bias, because the closing is also going above the H3 layer, which you can see it before, because untested pivot market is likely to trend go beyond layer 2 or layer 3. So that's what is happening. And see, the monthly bias is also changing. How you can say that? See, you can put the monthly CPR and you can see the prices above top central now. It opened in the sell bias, means we're shifting downward. 2 day relation, 2 period, 2 month relation is bearish in gold, but it's going up and changing the bias. So today the bias has shifted in monthly time frame. And what you can see also is we had decided few rules for the setup. Like this is weekly R1 if you see guys. And हमने पहले भी CPR videos में discuss किया है कि why R1 and S1 is important. If price is taking R1, do not sell, because it's already gone for bullish case. इसके नीचे है it's sell, don't buy. So ये सब चीज़ें हमने पुराने वीडियो में कवर कर ली हैं. S1 और R1, आई थिंक वी डोंट नीड टू कवर ऑल सच थिंग्स कि R1 के ऊपर क्या है, S1 के नीचे क्या है. गो एंड चेक आउट द डिफरेंट CPR वीडियो सीरीज. सो बेसिकली हमें 2 दिन का कैमरिला रिलेशन पता होना चाहिए, के हिसाब से बायस सेट करते बनना चाहिए. प्रीवियस दिन का
बायस क्या था कैमरीला का, आज के दिन का बायस क्या था कैमरीला का. सो वंस यू हैव एवरीथिंग इन द चार्ट, मतलब एक ही स्क्रीन पे, वंस यू हैव CPR on the screen, once you have Camarilla pivot on the screen, once you have money zone pivots on the screen, so we will only be buying at the best price. मतलब जो दिन का सबसे बेस्ट प्राइस होगा, मान लो ऐसे कुछ लेवल्स निकल के आए, कुछ कुछ भी लेवल्स निकल के आ सकते हैं. पिवट पॉइंट यहाँ है, L3 यहाँ है ना, और POC यहाँ है. सो हमें हमेशा कोई भी रूल ब्रीच ना हो कि बुलिश केस में हमसे बॉटम सेंट्रल के ऊपर ही बाय करेंगे, बॉटम सेंट्रल के नीचे बाय नहीं करेंगे. क्लियर, जैसे हमने CPR वीडियो में डिस्कस किया. कैमरीला में हम हमेशा L3 के ऊपर ही बाय करेंगे, L3 के नीचे बाय नहीं करेंगे. सो ऑल दीज रूल्स शुड बी मैच्ड प्रॉपरली. सो जब भी ऐसा दिन बनेगा व्हेन ऑल द रूल्स आर लाइक वेरी क्लियर कि हम अंडर वैल्यूड खरीद रहे हैं एंड स्टिल इट्स अबव POC, it's above top central and above L3, that is going to be the smoothest buy possible. So these were few things. So basically हमने कैमरीला का लेयर 3 और डिस्कस कर लिया है, कैमरीला L3 H3 pivots, and now we'll talk about layer 4, L sorry H4 and L4. इसका मतलब यही है कि जब इसके नीचे निकल जाए, है ना, इसके नीचे L3 के नीचे या H3 के ऊपर, तो द बायस इज फिक्स्ड. और अगर इसके नीचे निकल गया है तो फिर द बायस हैज चेंज्ड कंप्लीटली, मतलब एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है, एक्सट्रीमली बुलिश. यहाँ पे एक्सट्रीमली बियरिश. अगर L3 के नीचे L4 तक चला गया है तो दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश. द ट्रेंड हैज चेंज्ड नाउ. L4 लेयर इसीलिए है कि ट्रेंड चेंज को नोटिस करने के लिए. ऑल्सो द रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड ऑल्सो हैपन्स फ्रॉम सच लेयर्स which is L3 or L4 and also H3 and H4. The reversal of the trend also may happens from here. So हमें ये सब cases encounter करने पड़ेंगे, सारी probabilities clear होनी चाहिए, like CPR relation के हिसाब से. And also Camarilla is really simple, the only 2-3 things. Where is the opening with respect to L3 H3? So I think this video is over. If the opening is above H3, that is bullish bias, guys. We are very clear on that. The opening is below this, we have like very clear bias. This is sell bias, strong sell bias. So basically what you can do, you can just go on the chart and use this indicator. This indicators tells this indicator tells us many things about the CPR and Camarilla bias. So go and use this indicator. This is CPR and this is Camarilla pivot. And also if I were to show you few examples on the chart, see Nifty, the opening is above H3. This is already a bullish case. So today what happened, the bias shifted. As you can see H3 के ऊपर ही open हुआ, H3 के ऊपर ही close हुआ. It is the bull bias significance. But trend क्यों नहीं हुआ? For that you need to know like multiple things together. You should apply these CPRC because it is below bottom central in daily weekly time frame. So weekly it is sell bias, Camarilla bias is bull bias. So everything was mixed if you notice. So that's why it did not trend, did not go anywhere. It just also see came for selling after touching the best sell price of the week. This is the weekly CPR. And also if I were to show you the daily CPRs, the daily CPR, the bias was bullish bias. That doesn't mean you should be buying. You should be buying here because this is the right undervalued price. Or you should be buying at Camarilla H3 or R1 daily pivot because the opening is above this. So this is how you can know the best buying and selling prices all mathematically, like how you will be navigating in the stock markets. And also if I were to show you a few more charts, see Bitcoin bullish bias,
mean shifting upward, opening above stop central, exactly taking support at L3. See, see, this is L3 Camarilla pivot and this is H3 Camarilla pivot. Taking dip at H3, exiting at L3. So this is also when you apply, this was the double pivot zone. सी दिस बुल बायस बिल्कुल सिंपल, इतना हमने समझ लिया है सीखने के लिए कि व्हेन टू लाइंस आर टेस्टेड R1 इज द एग्जिट पॉइंट, सो दिस वाज द गुड बुलिश पॉइंट. इसके नीचे हम खरीदते नहीं है, ये हमने सीख ही लिया है. और L3 के नीचे भी हम खरीदते नहीं है कि अगर ये इसके भी नीचे जाता तो इट टर्न आउट टू बी द सेल बायस यहाँ से. सो हम और भी मेजर करेंसी में थोड़े एक दो पेयर और देख लेते हैं L3 H3 का सिग्निफिकेंस. आई शुड टर्न ऑफ द CPR. See, once it is above H3, it is going for the bullish bias. And see, for daily, it has untested pivot, untested L3. It will continue to rise for R2, R3. We have already discussed the CPR probabilities for that case. See, also here if you see, also H3 broken, extremely bullish case. You should not be selling once H3 is broken. See, also if you see this case, see L3 point is bullish point. यहाँ पे हम देख चुके हैं L3 से buy आ रहा है, but once we will put the daily CPR, see it's a sell case. So mixed bias, consolidation happened. When the biases are mixed, then only the consolidation happens, guys. Once you have this clarity, see it was a perfect sell. Once L3 was broken, it was a sharp sell. एक बार भी L3 टूटा and see the bias was rejected, the CPR were shifting upwards but the opening was below bottom central, so it was a sell bias. नीचे आते गया tried to take some support at L3 and S1 but see it was untested CPR, so S1 S2 के नीचे ही जाना था, because when the CPR remains untested the closing goes beyond layer 1 or layer 2. So these were the, see also same thing here also, as you can see, this was the L3 untested, ऊपर गया R1 को ब्रेक किया and H3 के ऊपर जाते ही it turned out to be the bullish case. और ये नीचे डिप कहाँ लिया, डिप लिया ये exactly अगर मैं दिखाऊं तो मनी जोन पे. मनी जोन समझने के लिए मनी जोन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. ऑन क्यों नहीं हो रहा, या सो this was the okay, this wasn't the money zone, so basically the POC is also untested, it is really likely to go upwards. देखो सिंपल कि ये कहाँ डिप किया, ये भी POC नहीं टच किया. Extreme trend cases, see this case we were just discussing inside range case, just when the CPR relation of two period remains unchanged and also the money zone of two period was unchanged, so this was the extremely trending case, guys. This thing happens very rare in the market. This thing happens कि नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, overlapping, this was the non overlapping CPR formed and all. But see, this was the rare, this thing is rare, unchanged case, and this always makes a breakout. जिस भी side opening होती है उस side के लिए it goes for a breakout. If this thing also happened on some other pair, if then I'll show you. See, it was a sell bias 2 days, sell opening below POC एंड L3 कैमरीला सिखा रहा था यार, इसमें मैं मनी जोन पे आ गया बिकॉज हमने मनी जोन का वीडियो कल ही कवर किया है ना, तो इसलिए मुझे मनी जोन भी अच्छे से समझाना है. सी इट इज गोइंग बिलो L3, ओके, अनटेस्टेड कैमरीला पिवट, इट कैन गो फॉर S2 S3, इट इज इन द सेल ट्रेंड. Also here it is the tested pivot, it can really likely to take support at S1 and L1 because the pivot is untested. The probability says that it is 70% chances that it can close in R1 and S1. So these few things, guys, simple things, simple maths. This is 2 day period relation, downside formed, opening below CPR, perfect sell bias, exact seller came from here. So जब एक बार ये सब क्लियर हो जाए, then you need to set कि whether you are going to be the initiative player or responsive player, how you will be turning the decisions in the market. So once you know everything about Camarilla pivots and CPR pivots and also money zone, then you can start to formulate your strategy. So go and check out all those videos for the deep insights about
CPR, and we'll be making few more videos with respect to Camarilla. So in this video, what we have basically covered, how to set the bias, what are Camarilla layers. So basically there are these 10 layers जिसमें से अंदर वाली काम की नहीं है. H3 L3 is the most important layer, and L4 and H4 is also the second most important layer. ये layers क्या बताती हैं हमने अभी डिस्कस किया है कि ओपनिंग कहाँ हो रही है उसके रिस्पेक्ट में वी कैन से अ लॉट अबाउट द प्राइस. बट व्हेन यू हैव द मिक्स्ड बायसेस, you just stay away from the markets when the biases are not clear. When the all biases are clear, the CPR says the same thing, Camarilla says the same thing, and money zone says the same thing, then you are very likely to take the orders, right? And everything has been catered through the videos which we have like already made. So go and check out those videos. And also, if you don't know, you're checking out first time on this YouTube channel, so then you can use this dashboard as well. So in this dashboard, what you can know the bias of multiple time frame. And see, this is showing the monthly bias is for sell. This is how you can see the daily and weekly biases. So this all the biases are sell. And also once you want to see it mathematically how many conditions were true, so not a perfect sell, but although it is a sell, also you can see the sell prices and bullish prices where you should be buying and where you should be selling. So see here also it was a sell bias, bullish momentum. Every price level is here. H3, L3, VPOC, and you can also turn on R1, R2, whatever is there. So this is like going below L3, then that will make it a strong sell chart if it also closes below L3. So there we go, guys. That's it for this video. I mean, uh, I have covered pretty much all in the video. So go and check out the CPR videos and Camarilla pivots and also Money Zone series. So I'll be making